ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। सर नाउ वी आर लाइव। दुग्गल साहब अनम्यूट कर लो। तेजी जी तो स्टार्ट किया था जब स्ट्रॉन्ग वी विल बी इन राइट। ठीक है सर बस 2 मिनट तक स्टार्ट कर दें 2 मिनट तक जी। सर करें स्टार्ट जी। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर चिराग जी आ गए या बाद में ज्वाइन करेंगे? नहीं ही इज हियर ही इज ऑलरेडी है। ओके मतलब ही इज अलोंग विद यू। या ओके ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਆਲ ਕਰ ਦਿਓ।
तो उसे स्टार्ट करते हैं जी, मेंबर्स जो ऐड करते रहेंगे बीच में। ओके, रिस्पेक्टेड स्पीकर्स ऑफ द डे, सी ए रोहित गोयल जी, सी ए पुनीत दुग्गल जी एंड सी ए चिराग पटेल जी। सी ए अश्विनी जिंदल जी from Jalandhar, and ladies and gentlemen, very first good evening to all present. Actually, we have started our knowledge refresh and updation series. This is our second webinar under that series and first webinar on global career opportunity. So under global career opportunity, this is the first webinar for Canada specially, and today's speakers for the day would be CA Rohit Goyal ji, CA Puneet Dugal ji and CA Chirag Patel ji. Very first, I would like to welcome all the speakers and the attendant members of this profession to this webinar on virtual platform. Welcome all the members to this webinar. Now, before moving further, I would like to introduce our today's guest speaker, first CA Rohit Goyal ji. CA Rohit Goyal ji is a partner in Sar and Associates. Sar and Associates is a chartered accountant firm, consultancy firm with 9 partners, along with a total team of approximate 40 members. And this firm deals in direct taxes, indirect taxes, finance, consultancy, management consultancy, etc. CA Rohit Goyal is also holder of Canadian tax laws with the software tax courses level 1 and advanced tax course. He is also certified forensic auditor of by ICI New Delhi, certified concurrent auditor ICI New Delhi. He is holder of diploma in information system audit ICI. He is pursuing CPA Canada, CPA US and CISA also. He is very social amongst different along with different NGOs. He has been elected executive member of Ludhiana branch of NIRC of ICI. He has been speaker on preparation of project reports and career counseling programs across North India. He is also a member of DTBA Ludhiana. All his practical experiences are duly assessed by CPA Ontario. Even now, he is providing services to a lot of clients, including clients located in Scarborough, Mississauga, Brampton, Toronto, Markham, Richmond Hill, etc. He assisted clients in implementing their units in Ethiopia, also assisted clients in getting economical funds from China and UK. Rohit Goyal is our his first speaker of the day. Now I request CA Abhinav Kansal to please introduce our second speaker, CA Puneet Dugal ji. CA Abhinav Kansal. Honorable CA for providing an opportunity to introduce our just and dynamic chartered accountant. This platform is providing a wonderful opportunity to all our members to enhance their knowledge on various global career options, particularly in Canada. As I said, Puneet passed his BCom in 1996 and completed his chartered accountancy in 2001. He was the chairman of Jalandhar branch of NIRC of ICI in 2015, and he created a history by becoming the first CA from non-Jalandhar to won the elections of a Jalandhar branch. In the year 2009, he also served as the president of a elite NGO, GST Pagwada Elite. And the most remarkable part is that his work towards the society was appreciated by then Honorable Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. He was also awarded the Best President of the year 2009. He is also certified zone trainer of Indian GST and has conducted various training programs on budget, financial services, career options. In 2017, he migrated to Canada, and at present, he is successfully practicing chartered accountant in Toronto. Now, I will request you to please share his views on today's topic. अभिनव जी आपकी चल ठीक. Now I request CA Rohit Goyal and Puneet Dugal ji to please proceed and enlighten our members on the very crucial topic. This topic is very you can say favorite for all the members of CF90.
एक्चुअली जैसे आजकल हर सीए के बाद बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स में हर पर्सन एक्सपर्टाइज कर सकता है। वैसे ही दिस ये एक अपॉर्चुनिटी अब्रॉड भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा लुक्रेटिव और बड़ा एक करियर अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। इवन आई थिंक डिटेल विल बी shared by all the speakers. I am not aware about the detail of this this process. How can I migrate to outside, or how what are the facility, what are the opportunity available abroad. All these will be shared by our worthy speakers. Not taking much of all time of all these attendees, I hand over the dice to CA Rohit Goyal and CA Puneet Duggal ji. Please enlighten our members. Over to you, sir. Thank you very much, Rohit. Hitesh, thank you very much. And Rohit, to start with, I'm starting it, right? Yeah. Actually, Okay. yeah, please go ahead. Yeah. So, Rohit, there's some echoes coming. If you can mute your and others' voice there. Sir, Some voices there in the background. I have muted all the sir. I have muted all the members. The person who want to speak can unmute himself and continue to speak. But I request all the members to please first complete the presentation of our speakers, so that disturbance should not be there when they are deliberating their deliberation. Sir, I have muted all the members. Now speakers are requested to please unmute themselves. पुनीत जी अनम्यूट कर लीजिए. Yeah. So Hitesh ji, अपना भी unmute, आप mute कर दो. Thank you very much. So I hope everybody can see the screen there, which I have shared. So Hitesh, I'm audible, right? Okay, that's good. So this seminar we have divided into 3 parts. So first of all, I will be giving an overview about what are how the life is there, what is my personal experience after I migrated to Canada, and then the second part will be taken by CA Rohit. So he will be covering all the opportunities what are available here for our members. And then we have a very eminent speaker, Chirag Patel. He's also a chartered accountant from India, and he will be covering that part, that how CPA Canada, a member from India who is a chartered accountant, can do CPA here and start his career here. So I'm starting my presentation, and as you see that my PPT is there. So first of all, let's see what are the benefits of getting the PR, right? So after I migrated, I get so many calls from our members that what are the benefits of the PR, how we can take the PR, and what are the opportunities available. That's why this seminar has been organized. Thank you very much to our worthy member, CA Hitesh ji, who has given us this opportunity. So when you get a PR, that's called permanent residency. So for permanent residency, a person who has permanent residency has all the rights of a citizen except a voting right. So voting right आपको तब मिलता है जब आप यहाँ के citizen बन जाते हो. So your children are able to get higher education, or जो भी यहाँ के citizens हैं उसी के हिसाब से आपको आपके जो बच्चे हैं उनको treat किया जाता है. And it is the same level of education, and the cost which is involved, it's same for a PR and a citizen. So when you are a permanent residence, in case your kids, because यहाँ पे जो education है बच्चों की वो 12th तक it's free of cost, they don't charge anything, but after 12th standard in universities they charge too much. But for a PR or a citizen, that cost is almost 8 to 10 times lower than what they charge to a foreign student. So your children can live with, you can live with the children while they are studying here.
you can serve your own country by reducing the population and of course by developing a foreign source of income for India. Because definitely अगर यहाँ पे आप earnings कर रहे हो तो you will send some money to your country back home for one or other reason. So that is one of the benefits that you get for after your PR. सो मैंने एक जो अपने एक्सपीरियंस से जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको ड्राफ्ट किया है कि व्हाट आई फील दैट पॉजिटिव पॉइंट्स आर देयर व्हेन आई माइग्रेटेड टू कनाडा, व्हाट पॉजिटिव पॉइंट्स हैव एडेड टू माय लाइफस्टाइल. सो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है डेफिनेटली इट्स वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल बेनिफिट व्हाट आई एम एंजॉयिंग हियर. बिकॉज डेफिनेटली एक इंसान के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ हाउ आर द कितना पॉल्यूशन लेवल है या कितनी साफ सफाई है. सो वो चीज़ें सारी everybody knows these Western countries, they have this advantage. So second point, what positive is here is that the life is very systematic. It's not haphazard. So यहाँ पे everything goes by schedule, everything goes by appointment. If we are in a profession, so everybody knows that we are working 5 days a week. They have not to disturb us on weekends. And कई बार मैंने इंडिया से कंपेयर करता हूँ तो एक फीस का बड़ा झंझट रहता है कि हाँ भाई हम काम तो कर पाते हैं वहाँ पे, बट फीस लेना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है. सो क्लाइंट से सो रिकवरी के लिए हमें एक अलग से डिपार्टमेंट, मैंने व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन माय ऑफिस देयर इन फगवाड़ा, सो मैंने एक बंदा इसीलिए लगा रखा था कि हाँ भाई रिकवरीज करनी है. सो वो यहाँ पे थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है कि people know that whatever services you are taking, you have to pay the money, and they are very punctual in that. So you get a lot of time to spend your family. So I know personally when I used to work in India, I used to practice in India how deadline work was there, and how I used to work even late nights when last dates are there. So I know everybody is in the same boat. So वहाँ पे फैमिली को इतना टाइम नहीं मैं दे पाता था. सो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आई एम एबल टू गिव माई टाइम टू माई फैमिली ऑल्सो. So children have quite a bright future prospects, because यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि you share your Canada share your border with the US. So you have an opportunity there also that if you are a citizen in Canada, you can work in US. So you don't need any visas or यहाँ open border system है Canada और US का. And यहाँ पे courtesy और humanity को बहुत priority दी जाती है. So that is one of the major thing wherever you go for shopping, either somewhere else. So people are quite courteous. So they respect you. They are very soft spoken. And this ये मैंने एक point last वाला जो है, I put it voluntarily because this is very important, that Canada has 65% of drinking water of the world. So that is going to be their major resources. So यहाँ का जो environment है उसके बारे में I've already told you. सो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी पेंडेमिक के टाइम पे निकल के आया है उसको मैंने ज़रूर ऐड किया है इस प्रेजेंटेशन में मैंने, कि हाउ कनाडा हैज़ हैंडल्ड दिस पैंडेमिक. So what was the difference with the other countries when you see that how this government has Canadian government or Canadian as a country has handled this pandemic? So first of all, let me share you so that slide. Yeah.
So Canadian economy and overview. So what is the economy of the Canada? Canada की जो economy है, it is a developed market. It is the 10th largest GDP economy if we count wise rank wise. Canada has the population of approximately just 3.5 crores. So 3.5 crore की population है Canada की इस वक्त. So Canada's per capita income is $47,590. One member, Canada is one of the elite members of G7 elite group of countries. So it has world's third largest proven petroleum reserves. So जितना भी Alberta का area है, ये सारा petroleum reserves यहाँ में भरे पड़े हैं. And it is the fourth largest exporter of petroleum, and also fourth largest exporter of natural gas. So these are some of the points which you can have a brief view about Canadian economy. So how they handled this COVID-19 situation response. So personally, जब यहाँ पे मैं migrate हुआ था, so definitely I used to compare how things are there in India, how किस तरह से चीजें हैं. तो definitely it's a human psychology. When you coming from other country, definitely you compare right now where you are and you compare it with where you were. So specifically COVID-19 की situation जिस तरह से यहाँ पे Canadian government ने handle की है, so that has really shown a very strong point कि यहाँ पे how effectively they have managed this situation. So to start with, they have given the direct package to the Canadians to the tune of exceeding $400 billion का इनका stimulus package था. So जो कि एक credit package नहीं था, it was a direct stimulus. So किस तरह से direct stimulus था? So I will explain you further. So जो liquidity package है, जो जिसको हम credit availability भी कहते हैं, so that was to the tune of more than $600 billion from the Canadian government. So जो मैं $400 billion की बात कर रहा हूँ आपसे direct stimulus package की, वो किस तरह से दिया गया यहाँ पे लोगों को. So I think 25th of March शायद lockdown यहाँ पे announce कर दिया गया था, and it went till June. So everybody lost their job. Everybody has losses in their businesses. So to every person who was working और जिसकी इनकम जो है $1,000 से कम हो गई थी ड्यू टू पेंडेमिक, सो हर एक पर्सन को उन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर हर महीने $2,000 every month, every person. So if your wife is also working, you are also working. So basically you were getting $4,000 from the government to spend so that आपके कहीं पे भी lifestyle पे कोई फर्क ना आए. And it is still going on. So still a few people are not back to their jobs. So still government is providing this. उसके बाद because I am handling a lot of businesses जहाँ पे मुझे उनका accounting outsource contracts मिले हुए हैं. So every business, जितने भी businesses हैं जो जिनका rent पे premises है, अपना premises नहीं है but उनका rent पे है. So most probably 90% of businesses are on rentals. So every business was reimbursed. So it was not that they were compulsory something कि हाँ भाई कोई credit provide कर दिया, ऐसा नहीं था. Every business is still getting 70% of your rent. So suppose किसी business का rent जो है वो $50,000 है. So उसका जो $35,000 है वो government pay कर रही है यहाँ पे. So direct. So one of my clients, they are diagnostic centers. They are having approximately 20 centers. So मैं उस दिन उनका हिसाब लगा रहा था. So approximately 20 centers का मेरे हिसाब से $3 लाख जो है रेंट पे करते हैं वो महीने का. So you can estimate कि how much grant they are getting. So 70% आप लगा लीजिए $3 लाख का. So they are only paying 30% of rent. And then government wanted that जो employers हैं वो अपने employees को ना निकालें, because यहाँ के laws जो हैं वो pro employee भी हैं, pro employer भी हैं.
सो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का नोटिस देना पड़ता है एंड यू कैन फायर योर एम्प्लॉय एनी टाइम। सो उसके लिए इन्होंने एक नया ये स्टिमुलस निकाला कि जितनी भी वेजेस एम्प्लॉयर की होंगी, अगर आपकी सेल डाउन है, अगर आपकी टर्नओवर जो है दैट इज डाउन बाय 70%, so right now what your turnover was last year, if you it was $100, right now it's $30, so they were paying 70% of your wages. नो सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। अगर 30% से टर्नओवर डाउन है, अगर $100 थी आपकी टर्नओवर और आज की डेट में, पिछले साल $100 थी, इस साल आपकी $70 रह गई है, तो आपको जितनी भी आप वेजेस दे रहे हो, उन्होंने कहा कि डोंट फायर योर एम्प्लॉयज, वी विल पे देयर सैलरीज, सो कीप योर एम्प्लॉयज विद यू, लेट इट बी देयर, so we will pay all your salaries. So the same company what I'm talking about, the diagnostic center, like they have a salary, the wage bill of approximately, मेरे हिसाब से उनका जो 20 सेंटर का वेज बिल है, so approximately $2 million है महीने का. So you can imagine that what kind of reimbursement support they are getting from government. So that is why this is such a high figure. Direct जो stimulus package है $400 से $1 billion से भी ऊपर है. So after that, they provided interest-free loans to small businesses to the tune of $40,000 to every small business. So to every small business, they provided $40,000 interest-free loan. और अगर आप वो लोन दिसंबर 2022 से पहले वापस कर देते हैं, then you will be given a discount of $10,000. So आपको सिर्फ $30,000 जो है वापस करने पड़ेंगे. Every student got $6,000 as a grant. Every part-time student got $3,600. So every child they paid $200. And अगर आपको कोविड हो जाता है तो हर हफ्ते, तो देन गवर्नमेंट इज पेइंग $500 पर वीक टू एवरी पर्सन जिसको कोविड हो रहा है, उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वारंटाइन करना पड़ रहा है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि जिस तरह से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को हैंडल किया. सो नाउ लेट्स कम टू डेफिनेटली जहाँ वो मेरे को बचपन याद आ गया जब वो ऐसे लिखते होते थे ना कि हाँ भाई जिथे फुੱਲ ने ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, we have already told you. So let's come to the negative part of Canada. So definitely it has also few negative parts. So सबसे बड़ा जो मुझे negative part लगा है definitely it's parents. So in some cases parents can't migrate and it's not easy for parents to migrate here. So they can come here on a visitor visa or something like that, but they can't be they can migrate permanently. Permanently migration लेते हैं यहाँ कनाडा में पेरेंट्स की, but they have a lottery system. So every year, so they accept 10,000 applications throughout Canada, and they give those parents जिनका lucky draw आया है a PR to them also to join their kids. So otherwise उसमें lucky draw में आपका नहीं आया तो definitely parents cannot get PR. They can come here as a visitor. So you miss your friends and relatives. So मैं बहुत friends छोड़ के आया हूँ, लुधियाना में बहुत friends हैं मेरे. So I miss every one of you. And कुछ शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, अगर विशाल जी, राजीव जी और पुलिस साहब सब वहाँ पे हैं तो. So then due to difference in exchange rate, Indian money has relatively lesser value. ये बहुत बड़ा disadvantage है because whatever net worth लोगों की जो इंडिया में होती है वो इंडिया के हिसाब से it's quite high, but when you come here, so then relatively यहाँ पे जो आपको अगर कोई बिजनेस करना है या आपको घर लेना है, so they are way more costly. सो डेफिनेटली वो आपको डिवाइड हो जाते हैं 57 से पैसे, तो यहाँ पे वो कम लगते हैं.
सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। सर आवाज़ नहीं आ रही, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। Yeah. So नाउ ऑडिबल सर। there was some internet connection, that's why. चलिए, so PR is very straightforward system in Canada. So it's all point system. सारा mathematics है, वो आपको internet से मिल जाएगा. And if you qualify with those numbers, then definitely you will get a PR. So 2 महीने का प्रोसेस होता है उसमें. अगर आप जिस समय आप एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपका उतने पॉइंट्स बन रहे हैं, so in 2 months you will get a PR. So that's not a problem. So definitely age, IELTS, educational qualification, आपका कितना working experience है, that plays a major role. एंड वहाँ पे जो है मैंने देखा है कहीं ना कहीं एज जो है वो एक बहुत डिसएडवांटेज रोल प्ले करता है अगर आपकी एज ज़्यादा है तो. सो उसके लिए इफ़ यू हैव लेसर पॉइंट्स देन यू मे ट्राई ऑब्टेनिंग अ जॉब ऑफर. अगर आपको किसी कंपनी से कोई एडवांस में जॉब ऑफर मिलती है वो ट्राई कर सकते हैं आप. सो दैट विल ऐड अप 50 पॉइंट्स टू योर स्कोर एंड जो एज का डिसएडवांटेज है वो कवर हो सकता है आपका. सर एक्सक्यूज सर, या सर ये जो मतलब वट एवर यू आर स्पीकिंग, वो पीपीटी के साथ लिंक कर रहे हो या आप मतलब पीपीटी अभी सारी शुरू करनी है? एक्चुअली मैम वो लिंक जी. सो आपको पीपीटी दिखाई दे मेरी? पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है, अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड फॉर चार्ट अकाउंटेंट्स. ओके, मैं मेरा ख्याल आई शेयर्ड रॉन्गली. ओके. सर पास्ट चेयरमैन एनआईआरसी हैज आल्सो जॉइंड, सी ए विशाल जी. विशाल जी, वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. अब नाउ यू कैन सी राइट रोहित? नो सर, नॉट येट. ओके. सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है सर. हाँ जी, मैं हाँ अभी जी पुनीत जी, हाउ आर यू विशाल जी? वेरी फाइन सर, थैंक यू. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ सर आपको. हाँ जी सर, और ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ? जो हुक्म ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ. हाँ जी सर. हाँ जी, मैं ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ. हाँ जी सर, पहले टॉपिक है. ਕਰੋ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ. नो प्रॉब्लम विशाल जी, मोस्ट वेलकम. सो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इसको. तो नाउ यू कैन व्यू इट राइट? सर स्टिल फर्स्ट स्लाइड इज देयर. या नाउ इट्स ओके. नो सर, फर्स्ट स्लाइड. पुनीत जी ओनली फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है. ओके, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? यस सर, हाँ जी हूँ ठीक है सर. ओके. हाँ जी हूँ डन हो रही है जी. ਸੋ ਪੀਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ डेफिनेटली एज प्लेज अ डिसएडवांटेज. तो कई बार एज के कारण आपको पॉइंट्स नहीं मिल पाते उतने. सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई सम अदर ऑप्शंस विच इज़ लाइक अ प्रोविंशियल नॉमिनेशन. तो वहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ कनाडा का स्टेट जो है नॉमिनेट कर देता है. उस कैटेगरी में पॉइंट्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं रादर जो आपका एक्सप्रेस एंट्री है. सो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है. एक्सप्रेस एंट्री में आपको मैंने बताया 2-3 महीने में आपका पीआर आ जाता है. बट इसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 months to 1.5 years तक लग जाते हैं. So life in Canada, seriously speaking, people have different views on this, but I'm just loving it. So I personally found it very good. So जिस तरह से मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाता हूँ या अपने खुद की हेल्थ को टाइम दे पाता हूँ, वो थोड़ा एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पे. एंड Canada is a beautiful country, so there is a lot to explore here. So, especially जो एक सेंस ऑफ
रिस्पेक्ट जो है यहाँ पे, जो कर्टसी है, जो लोग यहाँ पे एक दूसरे को एक्सटेंड करते हैं, सो डेफिनेटली दैट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग. एंड ह्यूमैनिटी वाइज अ सर्वे बड़ा बहुत अच्छा फैक्टर है ये. सो अ सर्वे फाउंड दैट ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियन शेयर्स द ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स. So 92% of people agreed that they shared. This is the major Canadian value जिसको हम यहाँ पे कहते हैं. तो इस कंट्री का जो प्रिंसिपल है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है. एंड they have a lot of consideration for this. So मैंने शायद चाणक्य की किसी बुक में पढ़ा था कि एक कंट्री जो है वो कंट्री जो है अगर आप चाहते हैं कि हाँ पे यू वांट टू एक्सप्लेन अ बेटर कंट्री, सो डेफिनेटली वेयर एनिमल्स हैव अ रिस्पेक्ट, animals have their own rights, so that country is a beautiful country. And I must really say Canada has that quality कि यहाँ पे animals को बहुत respect दी जाती है. And you will find a lot of uh, uh, good features regarding this here. So natural beauty बहुत है कनाडा की. It's really beautiful, lot to explore. शायद पूरी लाइफ लगे तो आप कनाडा एक्सप्लोर करने के लिए, बट वो भी लाइफ भी कम है इसको एक्सप्लोर करने के लिए. सो सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को. सो नाउ लाइक एजुकेशन टिल 12th ग्रेड इज फ्री. ये बहुत क्वेश्चन आता है लोगों का कि हाँ भाई मेरे बच्चों का कैसा फ्यूचर है वहाँ पे. So main focus of education is here to make better, creative and self-sustained citizens rather than stress on bookish knowledge. So students are encouraged to think and be innovative. एक और सवाल मेरा बहुत सीनियर मेंबर से आता है कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं. So definitely Canada has world-class universities. बट उसके साथ साथ एक डार्क पॉइंट भी है कनाडा का, जहाँ पे इन्होंने जो है एजुकेशन को बहुत एक कमर्शियलाइज कर रखा है. सो यहाँ पे छोटे छोटे कॉलेजेस भी खोल रखे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. सो वो कुछ नहीं है जैसे हमारे वहाँ पे एपटेक और कुछ NIT वगैरह के सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे. सो उनको एक कॉलेज कह देते हैं. सो वहाँ पे लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल गई है, बट यहाँ पे इस तरह के कॉलेजेस भी हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while you are selecting a college for your child. So this is also very important. So health wise Canada health care जो है health benefit जो है हर सिटीजन और हर PR को अवेलेबल है. 18 साल तक कोई भी आपके चार्जेस नहीं है. Either you visit hospital, either you visit your doctor, anywhere. So 18 साल के बाद कुछ मेडिसिन जो हैं आपको अपने तरफ से देनी पड़ती हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट. सो हेल्थ केयर पूरा गवर्नमेंट का है यहाँ पे. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कई लोगों का सवाल आता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा. सो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स इज $3,000 एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 1800 जो हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रोसरी और सारा मिसलेनियस खर्चा बचा के आपको तकरीबन $3,000 पर मंथ पड़ता है यहाँ पे लिविंग कॉस्ट. और कुछ मेंबर्स जो हैं वो अभी बैचलर हैं तो उनके लिए मैंने ये डाला था कि उनकी लिविंग कॉस्ट कितनी है. सो अप्रॉक्सीमेटली $1,000 पर मंथ यहाँ पे है. ये बहुत सवाल आता है मेंबर्स का. So now the biggest question in your mind is whether to migrate or not. So my personal opinion is that हर एक इंसान के अपने सर्कमस्टांसेस है, हर एक इंसान का अपना एक माइंडसेट है. सो डिसाइड योर प्रायोरिटीज फर्स्ट, डोंट बी इन हश. सो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है एंड एवरीथिंग इज गुड देयर, यू हैव फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन देयर एंड ऑल दैट. सो फिर कईयों के पेरेंट्स के अपने सर्कमस्टांसेस हैं, कईयों की जॉइंट फैमिलीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ऐसा नहीं है कि ये सवाल कोई भी जवाब दे सकता है आपके लिए, वो आप खुद ही दे सकते हो. सो यू हैव टू डू स्वॉट एनालिसिस ऑन योर ओन एंड इफ यू फील yes definitely कि आप माइग्रेट कर सकते हो, definitely I'm sure it will be a good decision.
सो फेवरेबल पॉइंट्स कुछ दे रखे, ये मैं पीपीटी हितेश जी के साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन read all those points, unfavorable points. So whether to migrate, so ये बहुत एक ज़रूरी पॉइंट है कि राइट नाउ व्हाट आई फील पर्सनली कि दो ही कंट्रीज ओपन है माइग्रेशन के लिए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया. सो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, यूएस आपने देखा ही है, ट्रम्प ही हैज मेड इट सो डिफिकल्ट, सो आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा. या बाकी यूरोप है, यूरोप में यू डोंट गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज और उनके भी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं. सो राइट नाउ दोनों कंट्रीज ओपन है माइग्रेशन के लिए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. और इनके जितने भी पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं आपसे, ये सेम अप्लाई होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इनका सिस्टम सेम है, कंट्रीज सेम है ऑलमोस्ट. सो इनके लाइफ स्टाइल सेम है दोनों कंट्रीज का. So you can think wherever you like to, if you want to migrate, so you can choose out of these countries. So last but not the least, अब मैंने आपको बोला ही है कि हाँ भाई SWOT analysis अपना करिए if you want to migrate, या नहीं migrate करना चाहते हैं, so आप अपने circumstances decide करेंगे कि आप migrate करना चाहते हो या नहीं. सो लास्ट में यही कहूँगा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन और किसी को आसमान नहीं मिलता. So that is all. Now I'll be again joining after at the question answer session. So I request CA Rohit to please take over and do the part regarding to opportunities in Canada for CAs. Rohit ji. Thank you, Puneet ji. Puneet ji, if you feel better, so I think let the Chirag explain the memorandum with the CPA Ontario. So first you want to, Chirag ji, are you ready? Yeah. Ready? Let's go ahead Rohit, with that want you session to too. take over right now. Yeah, Chirag ji is starting his presentation. So. Yeah, good evening, everyone. Good evening, sir, and welcome. Good evening, everyone. Good evening, sir, and welcome. I'm Chirag Patel, and I'm taking over session on how to register with CPA Canada and how we can use MOU between ICAI and CPA Canada. So I would like to share. Please, I want to share my screen. No, this one. Okay. Can you view that? Can everybody view this slide? Hello? Yes, sir. Okay, great. Okay. So basically, there is a MOU between ICAI and CPA Canada, which made our life very easy. Because if you start a CPA Canada from beginning, it will take around 3 to 4 years. But because of MOU, we are able to finish CPA in span of 6 months time. So we need not to give all exams. They have a couple of exams and which are very costly. So basically, we are eligible to enroll for CFE exam, which is common final examination. So it's a 3 days exam. So it saves time and obviously money. She will guide you based on I prepare a slide. So basically, if you are thinking of CPA, doing this CPA, first thing you should do, you should browse cpaontario.ca website. If you are going to different province apart from Ontario,
then you should refer a site of cpacanada.com. In that you can get information province wise, but because of to exemplify in a better way, I choose Ontario because majority people come in Ontario. So if you see here web link, it's a www.cpaontario.ca. So basically I'll show you. Okay, here is the website. Actually, yeah, okay. I'm going out and anyway, it's okay. Okay. Yeah, I started. So basically, this is the website. If you can see, this is CPA Ontario, become CPA. If you go to this website, you can see here how to apply. Connection problem. This one? No, connection is gone. Okay. What is it? This one. Yeah. So basically, if you browse a website, you will see everything is online. So if you go, you see how to apply, then eligibility, then required documents, program requirements, experience requirement, so and fees and due. So all information you will get on this web page. Basically, 2 years ago, you had to do a manual registration where you fill up all form and then send all required documents to the CPA Ontario by courier or by mail or by email. But they recently they come out with the online portal where you just create your username and password, and once you are logging, every portal provide your platform to upload required documents. So it's very easy now. And then once you upload, they will review, they will screen it, and then they will approve it. If they have an additional demand, they will email you that okay, these are the deficiencies of document and we need these additional documents. You have to upload those documents back, and then they will approve your registration. So basically, this is most easiest way to register if you are eligible CA candidate. Now, coming to my PowerPoint slide. So these are my these are the web link given. Through that you can start your registration process, and it's very simple. It's the application form, and one of the basic document required to enroll for CPA Canada is certificate of good standing. So I advise you guys that always pay your membership fees on a time, because if you pay membership fees on a time, then ICAI will issue a certificate of good standing in a timely manner. Many times what happens, people don't pay membership fees. Not all chartered accountant, but I'm sure out of 100, 3-4 chartered accountant are like that, that once they become CA, they feel now membership fees is unnecessary expenses and they don't pay. But actually, once we become CA, we should pay membership fees on a timely manner, because through that fees, many middle class students are getting opportunity to write a CA exam, and we should feel proud on our Institute of Chartered Accountant of India, because it's an unbelievable fee structure, and we finish our CA. Because if you come to Canada, you will realize how costly education is. One exam is worth of $1,200, and even CPA exam is $1,800, and membership is $1,200 per year, and the CPE
program is worth of $400-500. So international institute are charging so much money, and compared to our Institute of Chartered Accountants of India is giving us platform at very economical rate. So we should feel proud on that, and we should always respect this. This is my genuine request, because many people say that, hey, I have not paid membership fees for 5 years. So I think this is not the right way. So if you pay your membership fees, you will get your certificate of good standing in a timely manner, and which is one of the most basic document required to enroll for CPA Canada. Here is a fee structure. So initially you have to pay administration fees $125 and annual student fees $600. So basically, what is annual student fees? So when you register for Institute of Chartered Accountants of India, you are paying registration fees plus exam fees, and you need not to pay any kind of annual fees, fixed fees, right? But in CPA Canada, whether you clear your CPA, you don't clear your CPA. If you are a CPA student, you have to pay annually $600 then. If you are fail, you are not fail, you are pass, or basically you are skipping exam this year, whatever reason. If you are registered with them, annually you have to pay $600 and plus exam fees. So this is a fixed commitment, $600 every year until you clear your CPA Canada. So including HST, the fees is $819.25. And if you enroll middle of the year, then you have to pay $480.25. So this is if you register between January to June, then you have to pay fees from January to December. If you enroll by middle of the year, let's say after July, you have to pay $300, half of the annual student fees. Okay. Now, many times we are confused that are my document completed, or are my documents sufficient enough for CPA registration process? So what you can do, you can email your documents to these email IDs like ITA registration at cpaontario.ca or CPA registrar. So many people in India, when they enroll, they might be little bit confused about requirement of documentation. So I should say this is the easiest way. You just email a set of documents and just request them that am I lacking any documentation part, or is any document is missing? So you can ask them through email and they will reply. Now, apart from educational credential and certificate of good standing, we need to have a practical experience. So we need to have 30 months practical experience around, and that's very easy. You just need to fill up a practical experience form, which is also available, and right now it is available in online portal. So you need to just fill up that practical experience form and submit it along with your resume. They need around 30 months, means 30 months multiplied by 160 hours. So basically, it's around 5,000 hours of experience they need. So and they need these 5,000 hours of experience in a different area, like taxation, assurance, audit, accounting, and then due diligence. So basically, when you prepare a practical experience form, make sure that your allocation of 5,000 hours are in a different area, and which should be matched with your resume. Because why they are asking resume? Because many people miss that point. They put something else in practical experience form, and they send something else in a resume. And then when they match, they know that okay, this person is not giving us a right
experience detail. So basically, always match your resume and practical experience form. So they are very smart. So they will ask you question that you have written this experience in practical experience form, but your resume states different. So then it's very difficult to justify. Excuse So me, sir. make sure. Excuse me, sir. Yeah, So this 30-month experience post qualification or pre qualification in case of chartered accountant? actually, in many of the cases, they consider articleship experience too. Okay, so we for Articleship, yeah. okay, so for CA curriculum for there 33 years article training is there. So we can consider 30-month training equivalent to articleship training. Yeah, you can consider, because many of the cases, even I have shown my articleship experience. Okay, So but I am not sure, because I had experience of 12 years, but I have many friends who come in Canada, and at the age of 23, 24 they started CPA. So they demonstrated articleship experience, and they are done. right. So it means So after qualifying a chartered accountant examination, immediately a CA qualified chartered accountant can migrate to Canada. yeah, they can migrate to Canada if they have eligibility of PR. Okay, one more question. Is there any criteria for experience in different areas? As you told, audit and assurance, taxation, like that. So, is there any minimum criteria that you have to spend so much of hours in this much of field or not? No, actually, there is no weightage on particular field. Okay, You can show balance, experience in all fields. right. And definitely, you should go as per your resume. If I have a lots of experience in accounting, then I will show more experience in accounting and little Definitely. experience in taxation. But that's okay. Right. Thank you, sir. Okay. So, okay. Now, CPA registration. So this is basically practical experience exemption given by CPA Canada to us, and this registration process will take around 3 months. Okay. So anyway, I'm coming to the slide. So practical experience form submission is important after passing CPA exam to take CPA membership. Hence, practical experience form one can submit nearby CP exam day or after completion of exam. So practical experience is not mandatory for CPA exam. This is mandatory for membership. So once you pass your CPA exam, after that, if you apply for membership, then practical experience needed. Now, talking about CPA study material. So CPA Canada provides e-book, and like our Institute of Chartered Accountant provides a study material, in the same way, CPA Canada provides us an e-book. E-book is sufficient material. It's approximately 5,000 pages material for including all subjects. So it is more than enough. Each subject will be around 1,000 pages. So you need not to refer any other material apart from this ebook, because this is more than sufficient. Then there are some private tutors. I should say the most reliable is Densmore, which course is between $1,500 to $2,500 for 1 year subscription. And then there is a Pass CPA, who charge 1,700 to 2,500 based on different level of courses. And the pass get expire after you pass. And then there is a prep formula. I will give, if you ask me that how much rating I should give, then I case writing speed. Internet is there. Okay, it's bad.
Okay, so all material are about technical knowledge and case writing techniques. Case writing skill are equally important to one is good in technical knowledge of each subject. Warrior needs strong physics, which means technical knowledge, and sharp weapon, which means case writing skill. So basically, it is different exam than what we write in our CA final because it is completely CPA is completely based on case writing. So you will be given a case of let's say 20 pages, and then in exam you have to read and then you have to answer in their defined format. You cannot create your own format. You have to follow their format. So this is the way you have to write a CPA exam. Basically, it's not like our CA exam where there is a complete focus on conceptual skill. So it is slightly different exam, but it's not a difficult exam. It is difficult because in Canada we are struggling. Uh, in Canada initially we are struggling and we are doing job, and apart from job we are studying. So it's always difficult. So if we are sitting at home for 3 4 months and we are just preparing the way we were doing in CA final, then this exam is not that difficult. Now let's talk about CPA exam structure. So basically, it's a 3 days exam, and I always call it Mission 454. So Mission 454, day one is 4 hours, day two is 5 hours, and day three is 4 hours. This was not there. So CPA exam preparation. So it's a 3 days exam, Mission 454. Day one 4 hours, day two 5 hours, and day three 4 hours. So basically, this day one is uh, is nothing related with any subject. This is completely business case. So this case we need to solve with our management skill, management and decision making skill. So basically, this is completely different case. It has no link with your 6 subjects. Day two case is a 5 hours case. So basically, there are compulsory subjects like financial reporting is a compulsory subject, and management accounting is a compulsory subject. But apart from that, you can elect one subject as a compulsory based on your specialization. Many people choose assurance, many people choose taxation, others choose finance. So based on which elective you took, so your FR, management accounting, and your elective. So you need to demonstrate your expertise in these 5 hours. So basically, they will give you 20 pages case, and then you have to write a solution on these 3 subjects. Day three exam is 4 hours exam, and your all 6 subjects will be tested. All six, like financial reporting, management accounting, taxation, and then finance, and then you have management and decision making. So this all subject will be tested in day three. So read technical material and practice on case writing for 30 to 40 cases for all 3 days. Case writing practice is key to success letter. So here I am ending my session. If anybody has a question, they can ask me. So I will address those questions after the session. Thank you, Chiragji. Thank you, Puneetji, on enlightening on the topics of life in Canada and the CPA examination. So now my part is to about the opportunities. I think for which everybody is concerned about when they are planning to migrate to Canada or they have landed into the land of Canada. So I used to get a lot of calls from various person about the opportunities here in Canada. So normally, like their first question is,
to get the CPA done while they are sitting in Canada, while sitting in India. So if I ask about their the purpose, so they ask that we want to migrate to Canada. So one thing is you should need to make it clear that CPA is not going to help in your immigration process, right? So as our Chiragji said, like our institute is we are doing the CA in India. Our institute's prime motive is the education. Here, education is a motive, but the primary they are selling the CPA designation. Like it's a commercial activity for the CPA Ontario, right? They are too much high costs are involved. If you are doing like you are spending $8,000 to $10,000 in just doing the CPA course, and you are not getting the PR, then there is no fun in making in doing the CPA here. In regard to further opportunities, I would rather suggest everyone like you should make your own research as well before you plan for the Canada and uh, right. So whatever the courses here, whatever the job market here. Canadian market is not as big as India. Like we sometimes have seen so many people who compare their amount they are getting in India and amounts they are going to get here. Like sometimes, like some CAs call me like they are getting 50,000, 6,000, 100, 8 lakh. They are getting 1 lakh. So then they compare the salaries here, uh, like somebody's getting $3,000 a month or 4,000, $5,000. Then they make a conversion into the Indian currency. That is not the right approach to explore your earning over here. Like the expenses are not as much comparable as we have in India, as we are staying with our parents or so many things, right? So a rental market here in Canada is as much as hot as according to the job market here. So in regard to like in regard to our accounting profession, I think due to its promising nature, wherever you go in the world, you will be having a lot of opportunities available in the accounting market. So accounting market in Canada is in demand and will, according to the latest survey, it will remain in demand in next 5 to 10 years down the market. So I was reading somewhere, according to the survey here, if you go to the Alberta, the median rate for an accounting job is $134,000. And if you come to Ontario, here again the median is $108,000, and third province is the Saskatchewan, where you can get median job is $108,000. So one thing you need to make it very clear that to get into the Canadian market, you need not be a CPA here, right? Because doing a CPA, there is a cost attached to it, $8,000, $10,000, and I have seen so many chartered accountants who are planning or Teji, can you please mute all of this? There is a little bit disturbance. Just a minute. सर म्यूट कर दिया सबको, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. Yes. So there is again noise on the back. जैसे अपने आप को म्यूट कर दो आप. Yeah. So I was talking about the job market over here. So jobs are it's going to be down the line 10 years. Their government is very bullish in accounting jobs over here. But we should not be panic like somebody is they just have applied for the PR and they start searching for the job, or they got the PR, they are landing in Canada after like say 3 to 4 months, but they want job here. Like it's Canadian market is not like that.
if you want to get job here in Canada, you need to be present here, right? Once you uploaded, in India, we can get the jobs by references or so many other things. According to a survey here in Canada, 85 to 90% jobs don't come into the market. You have to go through with sorry recruitment agencies, right? You should attend the job fairs, community help centers, religious places, uh, recruitment references, jobs, websites. You should make cold calling here. CPA Ontario's CPA offices in all across Canada hired a lot of persons during from November to January onwards. So due to the tax season here, because tax season starts from here about 15th January, which lasts up to 15th of the June. And then there are a lot of government sponsored programs as well, where you can find a better job for you. And in addition to finding a job, one must know like what kind of uh, designations are available here. I have conversation with a lot of chartered accountants. So one of the basic job here is a bookkeeping job. So most of the chartered accountant, sometimes they say me, they have never done the bookkeeping, so they don't know how to do it. So that make me very surprising. Like if they don't know the bookkeeping, then how they are the chartered accountant. So bookkeeping is a very basic job here. Even if you are doing the CPA, you will have to do the bookkeeping, right? So even in the CPA office, CPA office itself, 80 to 90% work is related to the bookkeeping. Auditing is not as much familiar as we have in India. Like we have tax audits, we have GST audits, we have statutory audits, and so many other things. Here in Canada, audits are not mandatory for the companies. Only listed company needs to get that. Or sometimes, like there are three patterns available, like notice to reader, which we called in India like a provisional balance sheet. Here it's notice to reader or review engagement. Review engagement is some specific if somebody has taken a bank loan. So bank sometimes stipulates for a review engagement. So again, that's a very rare situation. Audits only in the listed companies, which is, and 95% of the audits in Canada are handled by the Big Four only, right? So you have opportunities in the Big Four if you want to choose the audit profession over here. And as Chirag Bhai said that keeping membership here and CPE hours, it's a very costly affair in Canada, right? So if you want to have a licensed, like you want to be in practice, you have to take a license from CPA Ontario, and which all 1,200 plus $1,000 more. You have a $2,200 minimum as a membership fee, which gradually increases as the your practice gradually increases with that. So your membership will be more if you have more receipts coming in. And opening an office in Canada, like you need to have like good office here, one staff at least. So normally, like it costs you $10,000 a month if you are trying to open a office here. But rather, I would suggest like if you want to practice, right? You don't have only the certification rights, but lots of the things, lots of the things you can do without getting a CPA designation here in Canada. And you don't believe so many chartered accountants are pursuing CPA without considering the pre and cons over there. If you want to just want to make a study or something, you should go for CPA US rather than CPA Canada. If going to stay here in Canada, then I think
And that's true if you are going to in a job market, particularly related to your accounting. You should plan after coming here. You should understand the market here. Like you should spend 5 6 months here. You should after that you should plan the CPA here. At least you should start earning something when you are doing your CPA, when you are planning to spend $8 to $10,000. And opportunities as a chartered accountant would be a bookkeeper, investment advisor, estate planning specialist, licensed insolvent trustee, banking sector jobs. Then we have a mortgage, big mortgage market, trust accounting specialist, and cross-border taxation. Then income tax practice is also considered a very big opportunity over here. And in addition to this, like job markets or like opportunities depends on your age as well. If you are like very young, like 24 25 up to 30, you feel charm in your jobs. But if as a like if you are cross 40 45 and you are migrating to Canada, so there are many business opportunities available here. There are so many small businesses. So the question comes in like where we will get the investment. So government of Canada has a very good plan of government loan up to $350,000, in which you in any project you need to contribute 25% of your share, and you will get the loan from the government itself to buy the business. So business opportunities are there. Then you can be a real estate consultant. You won't believe that if you are a real estate consultant, and all other my worthy speakers will be agree to this. Real estate market in Canada is a very big, huge market. Even in pandemic, our market was going up due to the fact that we have a lot of immigration, and government of Canada has declared that going forward in next 3 years they are going to bring minimum 100,000. They are going to issue 100,000 visas, 1 lakh visas each year. So everybody who is coming to Canada, they are not going to they need house, yeah, either on rent or they need to buy the houses. And one more hard fact is that earlier the migration, the level of the people who are coming to Canada, they were different rather than they are coming. Now the people who are coming to Canada, they are bringing big cash monies into the Canada. So there is no point that real estate market will also go down. So you have to like you can think of this course as well. Then there is one big opportunity is you can think to work as an immigration consultant, right? So immigration, like there is a survey like 2 million or 2.5 million students who migrated in the past 4 years. So they have to apply their PRs in next 2 to 3 years. So you can see that what a big opportunities are available here. So definitely there is a struggle part as well. Up to 1 year when you land into Canada. So up to 1 year you daily think that you need to get back. Like you miss your friends, you miss your families, a lot of other things. But uh, it happened to me as well when I came here in 2013. So I didn't feel good here. Like after spending 8 to 10 months, I went back in India, and I start living as usual. But again, when I went to the India, I start comparing Canada versus India, life here, life in Canada, life here or life in India. So no doubt, like I think like money wise, India is much better. But end of the day, like you need a office or a house and a good car, right?
So I have seen there, like, everybody used to get these things in 2 to 3 years time span, and sometimes people buy the house less than 1 year. So you will get, like, these are the three important things which everybody, after becoming a CA, they are looking for. So here these things are like a requirement of your life. So these all are the things, like, I would say that we have here. And in India life, like, we have our household servants and helpers who help us in their routine life. But when you are working here, you have a lot of responsibilities attached to your work. Even if you are as a CPA, you have, when you are in practice, you have to go through an audit through the CPA Ontario, which costs you $200 an hour. So I think I have covered all of the things in available in part of the opportunities. So I would request all of you, if you have any questions, so you can ask us. Even our political brothers have their good careers in Canada, right? So they can have election contesting over here. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਜੀ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ MP ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਏਰੀਆ। I wish ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਬ੍ਰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੈਟ 'ਚ, 18 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। So in the meantime, I want to recognize the presence. मैं देख रहे हैं हकमिंदर जी ने ज्वाइन किया है। Thank you sir, हकमिंदर जी, we miss you। विकास गोयल जी हैगे साडे दोस्त, and जिन्हां ਨੂੰ मैं जानदा हैगा, so Divya Agarwal is there, Nipun ji, how are you? And Himanshu Bansal ji, Rajesh Sharma ji, Sadbir ji, how are you Sadbir ji? So Ankit Jain is there, so I can recognize, I can see Rajesh Arora is there, Vikas Goyal ji is there, wow. So thank you very much for joining us. Gaurav Dhar ji, I think he's from Jalandhar, Gaurav ji sade naal ne, so thank you very much Gaurav. So please unmute yourself and ask your questions. There is a question. Sir, after... So this is... Yeah, please go ahead. Sorry. So this is CA Som Consult. After a long time in this pandemic, I'm happy to see a presence of members in a webinar like this. This is a wonderful webinar. You people gave us light on various issues, which was really wonderful. I'm completely thankful to you, all the three speakers. I'm grateful to you from the bottom of my heart. I'm over to you, sir. ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਆਫਿਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਾਈ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ, 6 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਚਿਰਾਗ ਜੀ, all are in Canada. If you any query in relation to your matlab in Canada study or anything, you can ask. I'm looking at the question. There is a particular question: can we do CPA in India and then migrate to Canada? I again humble request, please don't consider the CPA first until you are migrated into Canada, because CPA
if you have done the CPA, you will be getting salary 60 to 65,000. If you are not a CPA, your salary would be 50 to 55,000, right? Rather than considering on the CPA, if you want to move, you should think of the life over here. Your priority should be the life. Then you should migrate here. Then think of the CPA. It is my humble request. Uh, can I say something here? Yeah, sure. Yes, please. Here. I will share very interesting fact to you guys. I was working for Loblaws when I come in Canada, and my first salary was around $58,000. And one of my colleague, he was senior to me, and he was making around $100,000. And we were discussing, and I one day I told him that I want to earn $100,000 the way you are in next year. He said it will not make much difference, Chirag. I said how? He said I have two kids. I'm making $100,000. That's why I have to pay daycare fees, 1,500 for each child, so $3,000 gone. And then I'm paying hefty taxes. So basically around 32,000. There is a tax deduction. So technically he was getting around $68,000. And apart from that, he was paying 3,000 for a daycare, and then he was getting a lesser child tax benefit around $150 per kid. So he was technically saving more child tax benefit like $500 per month or $1,000. So I will save more. But because of my career and my position, I have to accept this position because from here I can go up to $200,000. That's why I prefer to be on $100,000, but I'm saving lesser than you. So this is a fact of Canada. चिराग जी, हमने इसीलिए अपने आप को लोअर इनकम रखा हुआ है. तो बिजनेस में तो फायदा है ना. ठीक है. बिजनेसमैन पहले टैक्स कैलकुलेट करता है, उसके बाद इनकम कैलकुलेट करता है. ठीक है. एक क्वेश्चन है, there is no requirement for visa for CPA registration, but if you want to appear in the examination, then you need to have a visa over here. Then can I say something, Rohitji? Yeah, please. Actually, now globalization is happening, and one need to work globally. Then it needs a Western qualification. So what happened is many people in India, there is a trend that they are doing the US CPA. Yes. So Canadian CPA is also now preferable for many people. So either they are coming to Canada, they are not coming to Canada, or they will come in future. I think if they feel to do Canadian CPA, first they should get at least visitor visa. Once they get a visitor visa, so they can come here and attempt for an exam, and they finish their Canadian CPA, and then in any point of life they feel that okay, now it's a time to leave India and migrate to some other countries. So I think CPA Canada will definitely help them to settle down in a better manner compared to Indian Chartered Accountancy, because Western degree are more acceptable throughout the world, and it develop a more connection to get a job. So I think PR should not be primary criteria. I think primary criteria should be whether I should go for Canadian CPA or not, and why I should go for Canadian CPA. What I'm going to plan in future. Then better if they do earlier, basically questions comes over. They want to do the CPA just for the immigration purposes. No, then it will not help. Yeah, that's the thing I told. Sir, one question on YouTube. Our member Meherpreet Singh asked, one of the requirement is 2 years post qualification experience. Do we need to complete 2 years post CA to apply for CPA registration, or can we claim exemption for the same? Basically, no, yeah, please. Basically, there is a practical experience exemption if we completed 30 months of work experience. Okay, and my point is that practical work experience is not required for CPA course.
practical experience is required for membership. So once you become CPA, after that you have to apply for membership, and for that membership you need a practical experience. Yeah, Chiragji, you are right. For accordingly, you need to have for exemption of your practical training, you need to have post qualifying 2 year experience. So one of our members CA संदीप गुप्ता wants to ask something. CA संदीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और you can ask your question. सर वो मैंने चैट में क्वेश्चन आस्क कर लिए जी. रिप्लाई हो गया जी क्वेश्चन. सर BC Canada is asking for visa before registration of CPA. Is it mandatory to have visa in hand? As I reply you on the chat, every province has a different eligibility criteria. So basically, they experience many people register for CPA and then their visitor visa or PR got rejected and they ask for refund. So to resolve this issue, now they might have made this visa requirement mandatory. So in future, nobody will ask for refund or deregister themselves. Sir, is work permit visa will be equivalent? It's okay. See, as long as you are able to land in Canada by any medium, everything is okay. Okay. Is it preferable to do CPA Canada or to just come on PR basis and see the scenario first? You will not get PR based on CPA Canada because CPA is a certification. No. If I got PR of Canada, should I do CPA on the first landing or within a year, or should I wait for some time, say 2 to 3 years? It's basically your if I would be you, yeah. It's your priority basically, and basically, I would like my experience is you should first observe the local market, and then you should think of doing CPA over here. Okay, we should not do it on hurry basis. Yeah, like you should not be in hurry. Like you will be getting a job in any case. CPA is not going to change the scenario in one night only. Okay. Can I say something here? Yeah, please, Chiragji, add in this. Actually, see what happened. I'll tell you. The first and foremost criteria of getting a job with good company, not job only, a job with a good company. Because when you start a job with a good company, let's say Fortune 500 company, your career will be in a safe hand. I mean, you will be shortlisted by another Fortune 500 company. So your start is very important here. If you are able to complete your CPA at the time of landing to Canada, or just within a 6 months of landing Canada, I'm sure that you will get a job with a better company. It's not about getting job only. It's about getting job with a better company. See, better start, half work is done. And in any job, CPA is mandatory. Many people's career is pause or stop because they are not CPA. So as soon as you do CPA, as earliest as you do, that's a better for you. It will be better to do it at the earliest. And second thing, you never know what will happen in future. They will change their syllabus, they will change their examination structure, they will change the criteria of MOU. Everything is uncertain, right? So if they will change, then what will happen? Then the process will become more difficult. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सर एक मेंबर की क्वेरी आई है इसमें चैट बॉक्स में ही कि अगर बहुत सारे बिजनेसेस की ऑडिट होनी नहीं वहाँ पे, तो सीपीए करने का फ़ायदा क्या है? पहले तो आप देखिए कि आपने प्रैक्टिस में जाना है या कैसे करना है, राइट? कि अगर तो आपने प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स देयर इज एज फॉर डूइंग सीपीए, राइट? तो क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके पास एक अथॉरिटी तो है ही है ना, ऑडिट आपके पास आता है नहीं आता एक सेकेंडरी इशू है, बट बुक कीपिंग का भी तो आपके पास काम काफी आएगा ना उसकी वजह से. तो yes please, can I say something? Yeah, I have couple of friends who are doing practice, including रोहित साहब, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में
when we are in India, we might have seen many non-CA people are doing practice, right? But many of the, see, they will get mass, but they will not get class. If you want a class client, you should be CPA, because if you have a certification, see here people will rely on your certification. They want to know that which professional body you are joined, because यहाँ पे क्या होता है, बात बात पे शो हो जाता है. अगर if you do any mistake, you commit any mistake, you will held responsible, and then people will sue you, and you have professional indemnity insurance. So basically, you will get insurance based on which professional body you are, attached. So CPA is definitely an added advantage for practice. So I would like to add here that is जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि हाँ भाई ऑडिट नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज फिर क्या है. सो अपॉर्चुनिटीज आर वेरियस, सो यू कैन प्रैक्टिस इन इनकम टैक्स. सर आपकी आवाज़ इको कर रही है. आप म्यूट कर दो. So you can practice as an income tax consultant. आप income tax returns फाइल कर सकते हैं, आप लोगों की assessment करवा सकते हैं, cases यहाँ पे भी लगते हैं. एक बहुत बड़ा avenue है that is related with your payroll accounting. यहाँ पे छोटा सा छोटा काम भी जो है वो professional के थ्रू होता है. So that is also an added advantage. एंड कुछ चीज़ों का आप ऑडिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं सबका नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों का आप ऑडिट कर सकते हैं. एंड देन लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स इन लुधियाना एंड जालंधर दे डू फाइनेंसिंग कंसल्टेंसी एंड ऑल दैट, कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड ऑल दैट. वो बहुत बड़ा एवेन्यू है यहाँ पे, जो मोर्गेज का लाइसेंस ले सकते हैं आप यहाँ पे. सो यू कैन बी अ मोर्गेज कंसल्टेंट. सो लॉट ऑफ एवेन्यूज आर देयर. थैंक यू. नेक्स्ट. is non CPA can do bookkeeping here? Yes, he can do bookkeeping. No certification is required for CPA that. के पास मेजोरिटी काम जो है वो बुककीपिंग का ही है उनके ऑफिस में. Okay. But other than persons other than non CPA can also do the same work. Yes. सर आपको हम बताना चाहेंगे, हम तीनों मतलब चिराग जी भी कंपनी के कंट्रोलर हैं एंड ही इज हैंडलिंग 20 होटल्स इन कनाडा. मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, पुनीत जी प्रैक्टिस में है, and none of us is handling having the CPA designation. Okay, it's great. And so एक और बहुत बड़ा एवेन्यू यहाँ पे है जो मैंने यहाँ काफी एक्सप्लोर किया है, that is outsourcing. So you can obtain lot of work here. जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, I am still operating my Pokora office, and जितना भी यहाँ का आउटसोर्सिंग अकाउंटिंग है तो वो सारी मैं अपने फुकवाड़ा ऑफिस से करवा रहा हूँ, एंड पेरोल अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग. सो आई मैनेज हियर. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एडवांटेज. और आप मतलब बीइंग ए नॉन सीपीए, अगर हम क्लास की बात करें तो मेरे पास मतलब 2 लिस्टेड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का काम है, बुककीपिंग और अदर कंसल्टिंग. वन ऑफ द टॉप 5 हॉस्पिटल है जिसमें मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, राइट. सो मतलब अगर आप यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे हमें काम जो हमें बेसिक चीज़ पता है, राइट. और हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हमने करे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपकी ग्रोथ को कोई रोक सकता है $100,000 $150,000 तक. ठीक है. तो मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम ओवर हियर. सो my personal advice is you should go for the PR process first rather than going for CPA course first. CPA first. निपुण जी ने एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं आंसर कर रहा हूँ कि मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि यू शुड गो फॉर PR प्रोसेस फर्स्ट. और कोई क्वेश्चन है जी? या इफ अगर आपका PR आपको लग रहा है कि हाँ भाई यू आर श्योर टू गेट PR, आपका स्कोर बन रहा है, देन यू कैन ऑफ कोर्स स्टार्ट CPA पैरेलल कि हाँ भाई जब तक आप यहाँ आओ एंड आपका काफी काम हो चुका हो. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द. Any other question? Any other question from members? Sir, what type of work opportunities are there in BC? Hello. Rohit ji. हाँ जी.
सो बीसी के बारे में अपॉर्चुनिटीज पूछ रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया. सो Sir, opportunities across Canada are almost same. Same. Like we have the same kind of market over here. Okay. And the only difference is Ontario is having 55 to 60% of the population. तो उसकी वजह से population यहाँ पे opportunities ज़्यादा हैं. Okay. एंड आपका जो बीसी में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है. बीसी में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है. हाँ या Okay. because Thank you, BC thank is a limited geographical area जहाँ पे एक बाजू समंदर एक बाजू पीछे पहाड़ी है. So the limited landscape, right? And there is a development. If you see Ontario is completely different. So वहाँ पे cost of living थोड़ा ज्यादा है compared to other provinces. Compared to other. एक भगवंत Thank जी you, ने sir. क्वेश्चन पूछा है विच स्मॉल कोर्सेज आई मीन टू से यहाँ का टैक्स कोर्स कर लो, आप यहाँ का पेरोल कोर्स कर लो, और एक यहाँ पे हमारा क्विकबुक्स कोर्स होता है, आप वो कर लो. उसकी भी वो बिल्कुल फ्री कॉस्ट कोर्स है. ठीक है, आप ऑनलाइन जाओ, वहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर कराओ, उनके एडवाइजर बन जाओ आप. तो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर देयर. मॉर्गेज का कोर्स अभी पुनीत जी ने बताया था, उससे आप अपनी फाइनेंसिंग का काम शुरू कर सकते हो. राइट, सो दीज काइंड ऑफ Which type of And there is a which type of Canadian accounting security course. software is being used mostly? most of the time over here QuickBooks is we use QuickBooks, but अगर कुछ अच्छी कंपनीज हैं तो वो SAP भी यूज करती हैं, और फिर Sage भी यूज होता है. Yeah, Sage is second common software in Canada. Yeah. Sorry, which one? Sage. Sorry. Sage. 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 Okay, Sage. Okay. Thank you. Any other Anything questions? else? एक हितेश जी का क्वेश्चन आया था. हितेश जी, आपका भी क्वेश्चन था, पूछो जी. तो मेंबर्स के क्वेश्चन आए थे, मैंने इसलिए वो सब क्वेश्चन मेरे को लगता है चैट बॉक्स में हो ही गए हैं मेंबर्स के. एक तो ये था कि जो जिन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना है उनको ICAI की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. सबसे पहला ट्रांसक्रिप्ट होती है जी, ट्रांसक्रिप्ट ICAI की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट आती है, और CPA करना है तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए. अगर CPA नहीं करना तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट जाएगी जो वेस्ट के पास जाती है, यहाँ पे आपकी एजुकेशन को असेस करने के लिए. ओके. और एक क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट को माइग्रेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है जी? देखो, जो कॉस्ट की अगर बात करें तो इंक्लूडिंग लैंडिंग फी इट शुड नॉट बी मोर देन 4 लाख से 5 लाख के. इट शुड नॉट बी मोर देन दैट. 4 लाख 5 इंडियन रुपीज और इंडियन रुपीज 5 लाख में तो घर आ जाता है डॉलर में. May I ask some question, please? सर वेरी फर्स्ट यू आर वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. वेरी फर्स्ट सर. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ. ਹਿਤੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਕਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਈਫ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ. हेलो. अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के. अच्छा, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं. तो चलो, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरा ये है, इन केस वी स्टार्ट द बिजनेस इन कनाडा, तो उसमें जो फंडिंग है, जो फाइनेंस है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कितने % हो जाता है? जैसे आपने बताया 75% हो जाता है एज लाइक इंडिया. सर वो सिर्फ गवर्नमेंट लोन है. अदरवाइज हम अगर बात करेंगे फंडिंग की तो इन केस ऑफ बिजनेसेस डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट कैसा है. आपको 10% की फंडिंग हो जाती है, 20% पे भी हो जाती है. वो आपके क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करती है बाकी चीजें. ओके, वन थिंग मोर, इन अगर आपको गवर्नमेंट लोन लेना है तो 25% मार्जिन आपकी तरफ से चाहिए. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कमर्शियल है आजकल 4-4.5% चल रहा है, बट अगर जैसे पीक पे था पहले पीछे तो 6-6.5%. और एवरेज 4% के करीब रहता है. नहीं, कमर्शियल में 6-6.5% है जी, अगर बिजनेस लोन लेना है. ओके. इन केस वो हम कोई बिजनेस की एग्जांपल लें, जैसे आपको ये सजेस्ट करें ये बिजनेस है, स्मॉल सा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, तो उसकी वायबिलिटी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं. और प्रॉफिट ज्यादा हो.
I think that is a very vast topic, Hukminder ji, and I think ये personally आप रोहित को किसी वक्त phone कर ले, because I know he is very much into that. He has helped a lot of his client in investing here in Canada, so that's a very vast topic. You Rohit ji, so I think हाँ जी बिल्कुल, वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज, अगर तुझे लोन लेना है, यू नीड टू बी रेजिडेंट हियर, अदरवाइज लोन नहीं मिलना। ओके, बीइंग नॉन रेजिडेंट ही मिलना है। ओके, in case we have PR, then we can get the loan, otherwise not possible. हाँ जी, हाँ जी। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। हाँ जी, बिजनेस ਦੀ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ $100,000 ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ $1,000 ਵਾਲਾ ਕਿਸ 1000 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ $1 ਲੱਖ ਹੋਊਗਾ ਟੋਟਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਸਰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਥੀਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ PR ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਗੋਇੰਗ ਦਿਸ ਵੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫਟਰ 45 ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਪਟ ਫॉर business instead of skilled workers. Hukminder ji, it's all actually person to person, all your personal circumstances. So कईयों को finance available है, कईयों को नहीं है, so अपने permutation combination है। Correct. So that depends upon person to person. एक मैं क्वेश्चन का जवाब देना चाहना, कईयों ने पूछा है कि BC और टोरंटो तो केड़ा बेटर है ओंटारियो तो? So both are better. So only difference, opportunity same है, the only difference is that ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਨੋਫਾਲ ਹੇਅਰ, ਐਂਡ ਵਿੰਟਰਸ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਅ ਪਾਰਟ। ਬਾਕੀ ਬੋਥ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ US, ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ BC 'ਚ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਸਰ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। These are just part of the joke. Yeah, sure, no problem. What about Calgary, Alberta? Calgary, Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਗੈਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪੈਟਰੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਸਟਰਬਡ। ਸੋ that is how it is. They depend more on petroleum products. ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ -40 ਜਾਂਦਾ, ਅਲਬਰਟਾ -60 70 ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਟ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੀਡੀਅਨ ਰੇਟ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ,
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। So in the meantime, Chirag ji exit कर रहे हैं. He is going. He has to go. He has a meeting somewhere. So thank you very much, Chirag ji. So एक बार आके सबनु bye कह दो. So just if you can wave your hand. So Chirag ji is already wearing a mask, so it means he's going. Thanks a lot, Chirag ji. Thank you, Chirag ji, for your Chirag ji, validation. Thank you, Thank you, Chirag ji. Okay, So sir. everybody Okay, is saying thank you. thank you. Okay. Thank you, Chirag. Bye. चिराग जी ने तो अद्धी वाली शर्ट ही पाई हुई है, ये ठंड शुरू नहीं हुई पुनीत जी? ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਵਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से सबने बहुत अच्छा गाइड किया। टाइम साहब भी दिख गया ऐसे बड़े दिनों बाद, सालों बाद। ਸੋ ਸਤਬੀਰ ਵਾਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਸਤਬੀਰ ਵਾਹੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਪੁਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪੁਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਮ ਸਿਕਨੈਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਨ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। हेलो, हाँ जी। नहीं सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे समटाइम्स देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन द एज फैक्टर जो पॉइंट्स रेलेवेंट टू दैट, सो द एज जो है वो 32 का बेटर करता है या 35 करता है? सर देखो जो एज के पॉइंट से आप बात करोगे तो 32 इज बेटर देन 35, क्योंकि आई थिंक आफ्टर 30 इयर्स आपके 5 पॉइंट जो है पर ईयर कम होने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो एक्चुअली ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, जैसे अगर ये 1-1.5 साल का जो लैप्स आ गया है तो इस देर यदि चांस के कुछ इसको सेट ऑफ मिल जाए या कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए फ्रॉम द एम्बेसी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था बेसिकली की है। सो कैनेडियन इमिग्रेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, it doesn't depend upon Canadian economy, it depends upon from where people are migrating. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਪ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਡਾਊਨ in any way। ਔਰ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਰੋਹਿਤ, I think they are bringing in 3 years they are bringing approximately 3 million people more। 1 million ਉਦਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ, ਤੇ 2 million ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਨ, yeah। So 1 million people ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ। So sir, actually how you will consider it कि आपको अगर लगता है you are settled, आपको 8-10 साल से सेटल हुए, तो आप उसको कैसे देखते हैं बिकॉज ऑफ द सच ह्यूज इमिग्रेशन टुवर्ड्स कनाडा? आपको कोई इनसिक्योरिटी रहती है इन दीस टाइम्स, जैसे इकोनॉमीज, ग्लोबल इकोनॉमीज थोड़ी शैकिंग, तो आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है? मैं तो कहता हूँ पर्सनल, हाँ जी रोहित जी, पर्सनल ओपिनियन यही है कि मतलब जो सेटल हो चुका है, तो मतलब आई थिंक एज ए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि अपॉर्चुनिटी और आएगी। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਗੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ
every factor is ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਚ ਕੀਤਾ ਮੂਵ। हेलो रोहित सर। हाँ जी हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे थोड़ा इमिग्रेशन के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछना था सर, कि जैसे जो मैंने थोड़ी स्टडी की है इसके बारे में, तो उसमें ये था कि सर अगर आइल्स में 8777 है तभी इमिग्रेशन पॉसिबल है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर अब जैसे प्रैक्टिस है, काफी हेक्टिक रहता है शेड्यूल सर, तो आइल्स के लिए तो 8777 क्या सर कोचिंग वगैरह कहीं लेनी चाहिए या कैसे करना चाहिए सर उसके बारे में? डेफिनेटली आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी अगर आपको 8777 लेना है। और दूसरी चीज ये भी है, आपकी जो अटेम्प्ट भी क्लियर होएगी। इवन इफ अगर आप मतलब यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, तो आपकी अटेम्प्ट फिर भी जो है दूसरी तीसरी बार में क्लियर होएगी। ओके। क्योंकि पुनीत जी के साथ भी ये इशू हुआ था। पुनीत जी के बाकी सब में 9-9 8-8 बैंड आ रहे हैं, एक में 6.5 रह गए। वो होते हैं सबका। तो सर ऐसे आइडिया हो तो सर अराउंड कितना टाइम इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है सर इसके अंदर हमें सर आइल्स के अंदर? देखो मैं तो ये कहूंगा कि 2 घंटे बहुत रहते हैं दिन में 2 घंटे रहते हैं बहुत। तो और सर ये पीटी भी चलता है सर कनाडा या आइल्स ही एक्सेप्टेबल है? आइलेट्स। ओके आइल्स। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेन पहले तो सर इमिग्रेशन और आइल्स के ऊपर ही ध्यान दिया जाए सर, ये तो सीपीए कनाडा तो हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब मैं तो खुद ये सजेस्ट करता हूँ, आपको $8-10,000 स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप उसमें बाइंड हो या कुछ भी है। कल को आपका मूड ही नहीं बनता आने का। तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि कैनेडियन सीपी का इतना स्कोप नहीं है और किसी कंट्री के अंदर। ओके हितेश जी, मैं हुन क्विट करांगा क्योंकि मेरा भी टाइम ओवर हो गया। सर बस मेरे को लग रहा है अभी सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, किसी अभी क्वेश्चन पेंडिंग रहा नहीं, तो आप इसको वाइंड अप करने की ओर चलते हैं। 2 मिनट लगेंगे इफ़ यू परमिट, राइट सर? तो सर जैसे आप स्पीकर्स आर इन हरी टू लीव दिस सेशन, इमीडिएटली आई रिक्वेस्ट आर मेंबर सी एस होम काउंसिल जी टू प्लीज प्रपोज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। सी एस होम काउंसिल जी। Thank you, Hitesh ji, for organizing such a wonderful webinar for the members. And I'm thankful to all the speakers, जिन्हों ने बड़ा कुछ खोल के दसिया। इवन इन्होंने कई व्यूज मेरे भी चेंज कर दिते हैगे ने, कुछ ओपन अप भी कर दिता हैगा, कुछ व्यूज चेंज भी किते। मैनू एक व्यू बड़ा वधिया लग्या कि अपना अपना परस्पेक्टिव आ कि तुसी किधर जाना हैगा, तुहाडी सैटिस्फैक्शन लेवल की आ। I'm on the behalf of all the members and especially CA Hitesh ji, I'm grateful to all the speakers. I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. It was a wonderful webinar. Thank you so much. Thank you all the speakers. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you Rohit ji. Thank you Dudal sahab. Thank you Chirag ji. And thanks to all the member Vishal ji, Hukminder Shahi ji, all the members for attending this webinar. Sir, please apologize me. मैं विशाल जी का थैंक्स नहीं किया। विशाल जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। विशाल जी क्योंकि इन्हें क्लोज पढ़ाने ना, और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव। ਤੁਸੀਂ ਸੋਮ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਓਵਰ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਸੋਮ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਹੁਕਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਕਮਿੰਦਰ ਜੀ। Thank you so much. Thank you all the sir. Thank you all the members. Aman Palla ji, Gaurav ji, Bhagwant ji, Krishan Grover ji. Thanks all the members. Varun ji for sparing their time and attending this webinar. Once again, I thank all the speakers and all the members. Thank you sir. Thank you sir. Stay in touch. Bye. Take care. Take care. Thank you. इधर फुल प्रोटेक्शन है ना।